हेलो एवरीवन, कुछ माइनिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, जो आपके आने वाले माइनिंग सरदार और ओवरमन के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एल्यूमिनेशन लेवल इन लक्स एट ऑपरेशन पॉइंट ऑफ CHP, यानी कि जो CHP होते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट, वहाँ पे मिनिमम एल्यूमिनेशन लेवल कितना होता है, कितना होना चाहिए। इसके ऑप्शंस हैं 30H, 50H, 100H, 100H एंड 50V। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 50H। जो कोल हैंडलिंग प्लांट में जो ऑपरेशन पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे 50H एल्यूमिनेशन होना चाहिए। ठीक है, कोल हैंडलिंग प्लांट में ही जो प्लेस क्रसिंग और स्क्रीनिंग और सेग्रीगेशन लोडिंग अनलोडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे 40H रहता है, और ऑपरेशन पॉइंट्स जहाँ है वहाँ पे 50H, और जो बाकी अदर प्लेस है इन जनरल में वहाँ पे 20H। इसके बाद अगला सवाल है, द एक्सप्लोजिव रेंज ऑफ मीथेन इज, ऑप्शन हैं इसके 2% टू 10%, 2% टू 15%, 5.4% टू 14.8%, 5% टू 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5.4% टू 14.8%। विच काइंड ऑफ apparatus BG4 इज, ऑप्शन हैं इसके गैस डिटेक्टिंग apparatus, escape apparatus, रिवाइविंग apparatus या ब्रीदिंग apparatus। तो जो कि ड्रैगर कंपनी का BG4 है, एक क्लोज सर्किट ब्रीदिंग एपरेटस है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ब्रीदिंग एयर सप्लाई करता है अप टू 4 आवर्स। ड्रैगर कंपनी का एक और ब्रीदिंग एपरेटस है BG174 जो कि माइंस में बहुत ज़्यादा ही प्रचलित है, तो उसके बारे में डिटेल वीडियो है, आप वो भी Closed देख circuit लीजिए। type apparatus, that is closed circuit type apparatus BG174. This is Dragon-Mac instrument. This model is BG174. This is self-contained oxygen breathing, oxygen compressed oxygen breathing apparatus. So this main specification of this apparatus is basically the main specification of this apparatus basically is it's having the total safe working hours in this apparatus is 4 hours in hard work. Okay, the cylinder capacity, since it is a self-contained research having the from the it supply the oxygen, it supply from the oxygen from the cylinder. So this cylinder capacity in empty is 2 liter. When it is full charge in 200 bar pressure, it's available to 400 liter of oxygen. So this another main specification is this capacity. The capacity of this breathing bag is having 6 liter, and the automatic another this main function of this apparatus is your long govern demand valve. It's automatically open as per the requirement of the wearer. So when it is fully charged, when this apparatus is fully charged, the total weight of this apparatus is 12.8 kilograms. So the main parts, the main components, we will discuss about the main components of this apparatus. So first we have to count this. This is the oxygen cylinder. From the bottom side, you can see, able to see, this is the oxygen cylinder, and this is the your cylinder valve. This is cylinder valve. When and this is connected with this pressure tube. This is having the pressure tube, and this is pressure valve. And when we'll open this pressure, the cylinder pressure, it will automatically flux out. It will automatically show this pressure of this in the pressure gauge. It will show you the cylinder pressure. What is the cylinder pressure? Then this is the having the pressure reducing valve. This one is the pressure reducing valve. It reduces the pressure from the high pressure to the working pressure, that is 4 kg centimeter square. It reduces this pressure, so that it's the normal dosage flow, that is 1.5 liter oxygen is supplied to the circuit. And this is having the pre-fluxing device. This is having the pre-fluxing device. It's what happened when the moment we open this cylinder, it flux out 7 liter of oxygen throughout the circuit to clean this circuit path, evacuate this nitrogen which is accumulated earlier. So this is the pre-fluxing device. This one the pre-fluxing device in the circuit, and it's come out. It will fluxing out this circuit, and it will clean the circuit. Then next we come to the components is your pressure reducing valve. Then it is coming to the bypass valve. This another having, this is the another circuit. It is having the bypass valve. When the long open demand valve is working, that time more oxygen we require, the more oxygen, the wearer is required the more oxygen.
when it is suppose somebody is running or lifting something, then it is doing the hard work, then the wearer required more oxygen, then it will supply directly. This line is having this line, it is directly supplied to the lung valve to more oxygen for the wearer as per the his requirement. Then next is your breathing bag. This is coming to the breathing bag. This bag is having 6 liter capacity. It's accumulate this oxygen in the breathing bag. Actually, this bag it is accumulate, the oxygen is accumulating. From the breathing bag, it is the inhalation and exhalation tubes are connected. This from the breathing bag, it is coming to the this long demand valve. And from here, then it is coming. Then this is your exhalation. There is an exhalation valve, and this is the inhalation valve, and this is the inhalation tube, and this is having the saliva trap. This saliva, whatever the saliva is coming out in the circuit, it is getting trapped in this saliva trap. And from here, it is coming to this mouthpiece. This is the mouthpiece, face piece. I mean, this is face piece. This face piece has to be where, and it is with the safety goggles, and it is to be connected with this. These are face marks is connected with this system by this circuit. Then again, it is when exhale. This is the exhalation pipe, and this is the exhalation valve. Okay, and from the valve it is coming to this regenerator cartridge. It is having the regenerator, and this is the cartridge. It is called the regenerator cartridge. It is having soda lime which absorb the carbon dioxide, and it is the remaining of it is discharge the oxygen, and it is carbon dioxide is being trapped, getting trapped in this regenerator. It is trapped in this cartridge, and this oxygen is again it is coming to this breathing bag. This is basically this is the closed circuit type apparatus. Hence, this is the system of the apparatus. And when these main features of this apparatus are when it is required. Suppose wherever is required more oxygen, it is automatically this demand valve will open. And similarly, this pre-ploughing device is having automatically the pre-ploughing will clean the circuit. And moreover, this the pressure reducing valve, which is having the pressure reducing valve. When the high pressure to this working pressure, that is 1.5 liter of oxygen is supplied, it will automatically done. And this is the having this cover of the instrument, and BG174. It is showing the BG174 and instrument BG4 not. Yeah, this is the BG174, and this is regarding your total BG174 system. अगला सवाल है, इन विच प्लान्स द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट शुड बी शोन. ऑप्शन है इसके अंडरग्राउंड प्लान एंड फायर फाइटिंग प्लान, अंडरग्राउंड प्लान एंड वेंटिलेशन प्लान एंड रेस्क्यू प्लान, अंडरग्राउंड प्लान एंड इलेक्ट्रिकल प्लान. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, वेंटिलेशन प्लान एंड रेस्क्यू प्लान. अगर आप CMR 2017 की रेगुलेशन 65 देखेंगे तो वेंटिलेशन प्लान में क्या क्या चीज़ें नेसेसरी हैं शो कराना, उनकी नंबरिंग में दी हुई है. आप इसे अच्छे से पढ़ लें एक बार कि क्या क्या चीज़ें हैं जो शो करानी ज़रूरी हैं. इसके बाद अगला सवाल है, CO फॉर्म्ड बाय O2 कंज्यूम्ड, इस रेशियो को किस नाम से जाना जाता है. ऑप्शन है इसके यंग्स रेशियो, विलेट्स रेशियो, ग्राम्स रेशियो, जॉन्स एंड ट्रिकेट रेशियो. तो इसका आंसर होगा ग्राम्स रेशियो. इसके बाद अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय डैम्प इन रिलेशन टू एटमॉस्फेयर ऑफ अ कोल माइन. ऑप्शन हैं इसके नॉक्सियस गैसेस, टॉक्सिक गैसेस, इन्फ्लेमेबल गैसेस या ऑल गैसेस अदर देन एयर. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको नहीं आता है तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा. तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही माइनिंग वीडियोस के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.